Vivo Pau. And without intimation with the commission, the reason for the second. Well explained. Very much for the Layo represented by Sri V. Gamlin, RFO, Tokam Forest Range. Tokam Forest Range is present with a authority letter from the Piazza. Apparently, mga hempa sa Vietnam funds na 2014 to 2024. And all kinds of reserve forest notifications in Namsai Forest Division. तो इस सिलसिला में आपको क्या कहना है? आपका क्या नॉलेज है इसमें? सर इसमें ऐसे करती है बैंक अकाउंट 24 उनको लिखो पाओ के लेटर किया था हमारे से कि योर इंफॉर्मेशन सो वेरी वॉल्यूमिनस ज्यादा बात क्या है बहुत लंबा है ना इंफॉर्मेशन हम पहले से अंदर कर लेंगे कौन सा डेट को 28 अगस्त 2024 28 अगस्त 2024 कौन दे गया है लेटर को? ये आपका सीसीएफ हमारा फर्स्ट एक्सीडेंट सीसीएफ के ईस्टर्न सर्कल ऑफिसर अमृतसर सर CCF uniform care for then the information sought by you are very preliminary. And government has the plan replied to you to this letter. The plan has not replied to you. The two letters are sent to him by the CC. वो आने से भी हम भी ये एलो नहीं करेंगे लेकिन वो आना चाहिए ना विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ द appellant to be given taking any decisions. Hearing the after hearing the hearing of the PIO, the commission observed another one. The information sought by the appellant is too voluminous, spanning for 10 years. And also, it is unspecific.
SES, applied for all kind reserve forests notifications in Namsai Forest Division, which is make VHGV imprints a non-serious application. Number two, as the appellant is not present in the hearing has to be a job today to give a real chance of being heard appellant, and therefore the next date be fixed for the hearing of the same in presence of both the parties. And the commission hereby orders, number one, the PIO to be present the next date of hearing in person or through online mode, or through a representative who has the full knowledge of the issue. Second, summons be sent to the appellant to be present in the next date of hearing. Failing quick, the appeal will be heard ex parte. Third, the notice of hearing need not be sent to the PIO as his representative is present in the court. Fix the next date of hearing on 10th July, 22nd July 2030 p.m. डेट को याद रखना 22nd जुलाई 2030 में आप ऑनलाइन अवेल कर लीजिए आ जाएंगे। हम लोग का सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑनलाइन प्रोविजन करने के लिए सबको मैंडेटरी किया है ऑल ओवर इंडिया, so we are following that, and उस दिन आने से भी we have to discuss on the issue, उसका details of information required का ऊपर भी, and its long span of time of information को discuss करेंगे ना, it's not tenable, and plus ये तो यहाँ का ना, ये नाहरलगुन का एड्रेस दिया हुआ है। कोई भी कानून इंडिया में बनता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए, आरटीआई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होने से हम मेरा कोर्ट में क्या इंटरप्रिटेशन हम करता है, हम खुद पासीघाट का पब्लिक है, हम इंडिया का पब्लिक है, बट अगेन इंडिया का पब्लिक है करके तो हम अभी बिहार में जाके तो हम पानी वाटर कनेक्शन नहीं मांग सकेगा, बिकॉज आई एम नॉट द फर्स्ट पब्लिक ऑफ बिहार और ईटानगर। हम नामसाई में भी जाके हम मेरा पीडीएस हमको राशन चाहिए, हम अरुणाचल इंडिया अरुणाचल का पब्लिक नहीं कर सकता है, और आई हैव टू बी ए पब्लिक फ्रॉम नामसाई, ऐसे सब कुछ चीजें हैं, तो उसको हम लोग उसको मैं डिस्कस करते हैं इसमें साइन कर लीजिए।
ये जरूरी है इसका बात ये तो ऑर्डर में चेक कर सकते नहीं पाओ से सेम है ये फुल पार्टिशन या यो कोई सेम वो वाला तो एंड मेक सिंगल रखा सेम ना जो ऑर्डर दिया है से दोनों को प्यायो को भी सामान दे दो कभी सामान दे दो next Nibo Pao Tawa Yondo terus dapat jadi Jiteng Lora itu terus wah dia for aneh ini dono ko samon bejo Nibo Pao and party ko भी samon bejo for aneh ko भी और next date वही से है ना ये भी वही है ये for लोहित Nibo Pao Jiteng order देंगे 3-2 कोई भी ऑनलाइन नहीं है ना आज ये भी अरे ना लुक क्यों नहीं आता है तो बताओ First, I feel excellent presence. Yeah, फर्स्ट फर्स्ट excellent authority का ऑर्डर का है तो आपका आप दिया था जी सर हमने दो बार अटेंड किया था ऑर्डर दिया जर्मन ऑर्डर भी दिया वो हाँ जर्मन ऑर्डर भी दिया था हाँ, तो उसमें सर ऐसा है सर हम थोड़ा सा ये हम एक थोड़ा कंफ्यूज है ये सिम मेरा दो एप्लीकेशन था इसका सर इसमें आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग एट नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20 सर ये उसका पॉइंट्स कैसा था कैसा हुआ only certified documents submitted for technical bid by the tender participants only देखता है इसको according to the fixed for hearing हाँ सर इसमें ये तो आपने सिर्फ किया इसमें टोटल पॉइंट्स कितना है 7 पॉइंट्स है ना तो 7 पॉइंट्स ना 7 पॉइंट्स पॉइंट्स में सर ये स्केल नंबर 1 में सर हमने तो बिट को हमको दिया इनको बिट का जो डॉक्यूमेंट्स है ना सर इसको दिया है आपको हमने दिया है तो इसमें इनकम्प्लीट है इन्फॉर्मेशन में ना नंबर 1 the here is provided the, the information are incomplete for number 1 और नंबर 2 तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सर और सीरियल नंबर सीधा 5 पे आता है फाइव नंबर 2 तक तो मिला है नंबर 2 given नंबर 3 given नंबर 4 given नंबर 5 फाइव फाइव का नहीं दिया सर 5 का नहीं दिया 6 का नहीं दिया और 7 का नहीं दिया 5
See, so number one incomplete 567. ये तो दे ये तो देने लायक है एग्जाम्प्टेड नहीं होगा ये वही तो सर सब इसका की नहीं होगी इसको हमने मैंने एकदम पूछा भी था है तो वो पेन ड्राइव भी दिया उन्होंने पेन ड्राइव में देना है पेन ड्राइव को भी हमने चेक किया और हार्ड कॉपी भी दिया तो हमने सब स्टडी किया स्टडी करने का पेन ड्राइव को भी हर एक पेज को हमने चेक किया तो उसमें वो ये जो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है ना सर वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो हम उसको बोला भी था वहाँ का स्टाफ से भी हम बोला था पीआईओ ने एपीआईओ साहब से बोला था वो इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ नहीं है देने से अच्छा है बोला है तो वो तो सब दे दिया बोलता है तो अभी हम क्या बोलेगा ना तो आपने भी मिला है बोलने से भी वो लोग सब दे दिया बोलता है heard the film stated that he has received the information the partial information income slash incomplete information for the information applied in his serial number one. The informations for serial number 2, 3, 4 have been provided by the PIL. The information for 5, 6, 7 is still to be provided by the PIL. 5, 6, 7, 5, 6, 7 still to be provided by the PIL. So hearing the appellant, the commission hereby observes one, in the absence of the PIO, the hearing could not be further as matter could not be just and to give a fair chance of being heard, the appeal is adjourned, the hearing of the appeal is adjourned to be heard on a next date. And the commission hereby orders number one, the incomplete information pertaining to serial number one of the information sought by the appellant being provided to him completely by the PIO through the information sought under serial number 567, the form A of the appellant be provided to the appellant on or before the next date of hearing. We send someone to the PIO to intimate him to provide the information to the appellant completely on or before the next date of hearing, and to be present on the next date of hearing without fail, failing which necessary action will be initiated against the PIO as per the provisions of RTI Act 2005. The notice for next hearing need not be sent to the appellant as he is present in the court today. Fix the next date of hearing on 22 July 2025 2:30 p.m.
373 country घूमते वर्सेस PIO कम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PW महाराष्ट्र वो भी सेम ही है क्या? इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट है The establishment of new medical college with district referral hospitals कमोरगा इसने furnish the certified sanction कुछ मिला है इसमें? सर इसमें उनका रिप्लाई है, एक रिप्लाई हमको मिला है सर ना। At the इसमें उन्होंने लिखा है कि हम सिर्फ टेक्निकली वो काम को गाइड कर रहा है, लेकिन उसका पास नहीं है बोल के लिखा है। जबकि सर इसका जितना भी टेंडर प्रोसेस से लेके जितना फंडिंग उन्होंने कर रहा है वो लोग कर रहा है, फिर वो लोग का पास इंफॉर्मेशन कैसे नहीं होगा? क्योंकि एनआईटी जो करा रहा है, जो एजेंसी वही है, तो उसका पास इंफॉर्मेशन नहीं है। the PIO has written a letter to the appellant dated 16 September 2024 stating that the project establishment of new medical college attached with district public referral hospitals bracket Gomoriba Institute of Health and Medical Science bracket close Harlaga that the office of the PIO is only giving technical support oblique advice to streams on technical matter. The streams authority is custodian for all documents. Therefore, asks the appellant to approach streams authority for furnishing of documents if any under RTI Act. Hearing the commission hereby observes number one, section 6 clause 3 of RTI Act 2003 says provides that where application is made to a public authority requesting for an information. Clause 1, which is held by another public authority. Clause 2, the subject matter of which is more closely connected to the functions of another public authority. Public authority to which such application is made. सर कैन आई स्पीक? Yes, shall ऐसा है ना नहीं, सर, पहले इसको कर देगा will transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant
immediately about such transfer. Going by the provisions of the RTI Act 2005, it is the PIO who has to transfer the application of the appellant to another public authority if that another public authority has the information and not the appellant or applicant. So the PIO has a liability to transfer the application of the applicant to the another public authority, which he has returned back to the appellant, possessing the informations in his sort. Herein, the PIO has failed in his statutory duty, and therefore the onus of providing the information lies on him, or through procedures to be followed by him, rather than simply putting it off on the responsibilities of the applicant. The commission here orders: number one, send summons to the PIO from executive engineer PWD Naharlagan to provide the information which are not exempted by the RTI Act 2005, or to transfer the application of the applicant to another public authority if the office of the PIO does not possess the information sought by the appellant. And the PIO is further directed to be present on the next date of hearing, failing which necessary action will be initiated against the PIO as per the legal provisions of RTI Act 2005. Third, the notice for the next hearing need not be provided to the appellant as he is present in the court. And furthermore, the appellant is directed to be present on the next date of the hearing of this appeal, failing which the appeal would be heard and decided ex parte. Sixth, the next date of hearing on 22nd July 30 PM. अभी आप बोलिए, ऑर्डर मेरा तो वही है कि उसका ड्यूटी है ये पेपर को अगर फ्रेम्स का पास में भी होने से भी he has to forward it, not you, as per the provisions of RTI Act. And then he also has to be present in the court when he is being notified about the hearing. Okay. But
in the absence of one of the parties, at least for the first and the second time, this court cannot be giving out its own judgment. So we have to give the other party also a fair chance of being heard. Let us hear him if he comes the next date of hearing. You also come that time. We'll hear what are the informations that you have sought, asked for. If those informations are really exempted, or if those informations are not with him. I also believe in you that आप काम को कर रहे हैं, आप आपके पास वो इंफॉर्मेशन कैसे नहीं होगा, विदाउट ये सब काम आप कैसे करेगा? सिंपली वर्बल में तो आप डायरेक्टर ऑफ ड्रीम्स ने आपको बोला एक्शन साहब आप ये काम को कीजिए गवर्नमेंट, हाउ कैन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क लाइक दैट? उसका रिप्लाई को दिखा है, दैट्स नॉट दैट। वही मेरा सर, वही मेरा भी हाँ कहना वही, वही इससे ऑर्डर तो सुनना होगा, ऑर्डर तो प्रोसीड उसी को यहाँ। हाँ था। आने दो वही। हाँ, ठीक है, वो आना है नेक्स्ट डेट। हाँ हाँ हाँ। Nabam Sono versus Executive Engineer Department Yechi Rasar. Leparada. Nabam Sono. ये लेपरादा का एक्शन नहीं है क्या वो? सेकंड both parties action. Have information. So the hearing speech for don't to do. Kya Changrang versus Dikha Khamin SE Rupa RWC and Chira SER. Yes. Both parties present. PIO, yes, present online. Through online mode. आपका फर्स्ट एपिलेंट अथॉरिटी में हियरिंग हुआ था? सर ये जो हेयरिंग नहीं कराया है, सर एक्सपायरी 45 डेज हो गया ना सर। हाँ, तो इसका बाद में भी हियरिंग नहीं अभी तक हियरिंग नहीं किया। नहीं किया। इसका बाद में आफ्टर 45 डेज पार होने का बाद में जो एक लेटर आता है कि ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हाँ, जो पास एथलेट अथॉरिटी को मैंने जो अप्लाई किया था ना सर, आफ्टर दैट यहाँ में जो सेकेंड एप्लीकेशन करने का बाद में 45 डेज एक्सपायरी हो गया, जाके मिलता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन पर्सनल है। तो हम भी सोचता था कि ये फास्ट अपील में ना सर सेटल हो जाने से ठीक है कि एम से वहां में हो, तो यहाँ में होता नहीं कि RW वेस्टर्न जोन को ये जो फास्ट केस नहीं है सर, 2 केस ऐसे हो कराता नहीं है। नहीं कराना पड़ेगा, ये तो ये लोग नहीं कराया तो हम लोग इसको वो उसको इसकी इसका फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी कौन है? एसई है ना? चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन। इसको हम लोग रिमांड करेगा, चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन को हियरिंग करने के लिए रिमांड करेगा उसको, बिकॉज उस ऑर्डर का बिना में वो प्रोसीजर लॉ एक प्रोसीजर से चलता है, तो उस प्रोसीजर में वो लोग फेल किया है तो ही हैज टू हियर यू। उस हियरिंग का जो आपका राइट है उन्होंने आपको नहीं दिया है, तो द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी हैज टू हियर यू। वो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी हियर का बिना हम लोग हियरिंग फिर नहीं कर सकते हैं। तो सर इसमें तो ये RTI का सेक्शन में लिखा है आपका 45 डेज है उसका। फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी जो 45 डेज तक जो हियरिंग कराना चाहिए, अगर है 45 डेज जो एक्सपायर हो जाता है तो दैट मीन जो वो कराना ही नहीं चाहता है, उसको डिनाइड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, डिनाइड ऑफ इंफॉर्मेशन में चला है। तो इसी बेसिस पे मान के हमने आए ओके यहाँ है, अगर वो करता है तो अगर भी जो सर वहाँ भेज देता है ना, तो फॉर्म ई का बाद सेकेंड एप्रिल का बाद भेज देने हम तो फ्रेश हो रहे हैं ना,
इसमें हम लोग जनरल सबको वापस किया इस बार से जो हियरिंग नहीं किया ना वो करना है उनसे मेरा जो नुकसान हुआ है हाँ जो कंपेंसेट भी कर दीजिए ताकि हम वहाँ हियरिंग कर सके 20,000 का रिक्वेस्ट करते हैं अगर हम 1 अप्रैल में भेजता है ना सर हाँ टाइम सीजन का साथ में एक हियरिंग कराइए बोल के भेजिए लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ फाइनेंशियली मेंटली जो हुआ है ना उसका 20,000 रुपीज हमको कंपेंसेट करना चाहिए नहीं तो सर आप भेजिएगा फिर वहाँ से कंपेंसेशन का भी एक प्रोसेस होता है for which you have to submit to the commission along with your proper vouchers and money receipts and all that you have incurred. ऐसे मुख से बोलने से तो कोई भी कोर्ट में आपको नहीं दे पाएगा. There has to be evidence, proper records को मानने के लिए ना. एक नंबर. दो नंबर ये है कि जब इंडियन पार्लियामेंट में ये केस को ये कोर्ट में इस प्रकार से करना है करके हम लोग अभी एक प्रोसेस को छोड़ के ऊपर जाने से सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी जब अपील आता है आपका लोअर कोर्ट हियरिंग नहीं किया बोलने से लोअर कोर्ट को वापस भेजता है कि आपने इसको हियर नहीं किया है यू हैव टू हियर इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम उस टाइम में हियर नहीं करने से अगेन व्हेन यू गो टू द एपीलेट कोर्ट बिहार एपीलेट कोर्ट तब जाके हम लोग डांट देता है उसको वो प्रोसेस है लीगल प्रोसेस है वो सेकेंड अप्रैल फाइल करने का बाद फिर सर यहाँ हेयरिंग होना हाँ चाहिए होना मुश्किल चाहिए है हाँ सर जो 2-3 months का बाद में यहाँ हेयरिंग होगा तो फिर वहाँ भेजिएगा वहाँ भी एक टाइम में हियरिंग करेगी उससे जो वहाँ का जो भी डिसीजन होगा इन केस ऑफ मैंने आउट ऑफ मेरा जो सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाए तो मैं सेकंड अपील की रहा हूँ फिर यहाँ में जो एनलिस्ट करने के लिए जो यहाँ में 2-3 months लग जाता है इसलिए हम सोचते हैं कि सर आप इसको वहाँ नहीं कहते सर आपका यहीं में सर ना सर यहीं में सर जो देख लीजिए कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन जो आपने इन्फॉर्मेशन सीख के है ना सर तो सही है ना गलत है यहीं में कंटिन्यू कर दीजिए इसमें से हमको नहीं इसमें आप पीआईओ अभी मिस्टर पीआईओ आपको क्या बोलना है इसमें सर इसमें जो आ रहे हैं जो में heard both the parties
सर मेरा ये काउंटर इसको रिप्लाई है सर। जी जी जी। तो रिस्पेक्टेड सर, तो मेरा ये है कि ये जो ऐसी रूपा है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RWC रूपा, उसका ऊपर में सर जो ये एक हॉनेस्ट ऑफिसर बोल के जो नहीं है, अगर वो हॉनेस्ट ऑफिसर था बोलने से ना सर, हम लोग को इसमें इसका ऊपर में कोई सीकिंग करना नहीं था। उसका ऊपर में सीरियस एलिगेशन एक है कि वो जो एक टेंडर का चेयरमैन रहता है और जो 9% कमीशन रहता है, ऐसे पब्लिक का एलिगेशन उसका ऊपर में है। दूसरा जो सर ये है कि ये जो कृषि रूपा एनएलजीडी का कानून जो सर, ये जो इसका ऊपर में जो एक वीवीपी रोड प्रोजेक्ट है ना सर, पब्लिक ने हाई कोर्ट में अपील किया। तो उसमें वो जो इसका टेक्निकल एवोल्यूशन कमिटी का वो चेयरमैन था सर। चेयरमैन होने का बाद में जो पास जो टेक्निकल एवोल्यूशन होता है हर चीज का, उसमें ही पूरा फॉर्म को आउट कर दिया। आउट करने का बाद मेरे और वहां से तो ठोको वो जो हो गया। तो वो लोग जो पार्टी का भी कहना है हाई कोर्ट अप्रोच किया है कि ये आदमी जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि जब तक ये इसका फाइनेंशियल बीट ओपन नहीं होता है, फाइनेंशियल बीट ओपन नहीं होना है, इसका ऑर्डर कॉपी भी है सर, मैं दिया है सर, ये इससे जो पब्लिक इंटरेस्ट बनता है। और दूसरा सर ये जो SHRI का काम है, उसका अपना वाइफ का सर ना, ये RWD एंड PW डिपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, इससे जो पोटेंशियल जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है। और ये सब केस नहीं होता है बोलने से, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता है बोलने से हम यहाँ नहीं आते। ये डॉक्यूमेंट जो नहीं मानना। अभी ये सर ऐसे हो गया क्योंकि बहुत सा जगह में जो जहाँ पे ये एल निका कविन जो रहता है, ट्रांसफर का जैसे कि हो गया ना सर, इसमें से इसका जो ये होता है कि कहीं वो फार्म का काम किया है ना सर, का डॉक्यूमेंट भी है सर। वेस्टर्न जोन का अभी तो ये लोग डिनाई कर रहे हैं, नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो ऑनरेबल ये कमिश्नर तफे सर जो ऑलरेडी डायरेक्शन कर दिया है ना कि वो इन्फॉर्मेशन भी देने की, वो मैडम भी होगा मालूम होगा। तो उससे भी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो अपना ट्रांसफर जहाँ में हुआ है, तो अपना जुरिडिक्शन में अपना जो जैसे कि वाइफ को फेवरिज्म करके जो नहीं दिया गया टेंडर जो ना, तो ये जो एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। दूसरा ये है कि अगर ट्रांसफर जगह में अगर उसका वाइफ को देते हैं तो डेफिनेटली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है ना सर। अगर हम ये भी नहीं बोल रहे कि एक जो बिजनेस तो कोई भी बिजनेस कीजिए ना सर, तो जो RWD डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर हो गए, वही में अपने मिसेज को फॉर्म बनाना, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंडक्ट का ऊपर क्वेश्चन करता है। सीसीएस रूल में भी ये आता है। अगर आपको इसमें भी बहुत सा है कि कर सकता है नहीं कर सकता, आप बोल रहे हो आप कौन है बोल सकता, आपको उसमें भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, डिफरेंट अथॉरिटी से ना। अगर आपका विशेष जो सेम जगह में जहाँ में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है, आपको वहां में अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट से, जाके हो। तो इसके जो सर ये मांगा है। दूसरा जो कहीं उसका तो ऑलरेडी फॉर्म है ही है मिसेज का नाम, इस तरह से और सेवरल एलिगेशन है और कमीशन का भी एलिगेशन है काफी है ना, लेता है एलिगेशन कहीं इस तरह से जो इसने उसका डिटेल जो मांगा है, इस प्रोपोर्शनल एसेट जो था जनरेट किया है कि नहीं, तो वो हम देखना चाहते हैं। अगर ऐसे नहीं है होने से ये डॉक्यूमेंट जो मेरे लिए कुछ नहीं इसमें सर, मेरा ये आर्गुमेंट जो रिटर्न में भी है सर, और सर उसमें का भी एक जजमेंट है सर ना, तो वो भी इंक्लूड करके रखते हैं। बहुत अच्छा जजमेंट किया ये लोकल का हर वाला ना। इसमें वो PIO इज प्रेजेंट ऑनलाइन मोड लिखा हुआ है। हर बोर्ड पार्टी द appellant stated that he has filed the Form A to the PIO, who is the Chief Engineer Western Zone, RWD Western Zone का जो फॉर्म ए का तो आप चीफ इंजीनियर को फाइल किया तो हाँ जी, then on 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 26 August 2024, and upon the application, the PIO forwarded the application to SHRI Rupa Division, रूपा सर्कल रूपा सर्कल रूरल वर्क सर्कल, हाँ
to Rupa Circle to provide the information sought to the appellant. Upon which the PIO come SE Rupa failed to provide the information within 45 days, stating on 2nd September, 2nd September 2024, Chief Rupa को लिखा है ऐसा लिखा है Chief Engineer को बोला on 2nd September 2024, the PIO CE ordered SE Rupa to provide the information. 2nd September 2024, and on which the SE Rupa ordered the executive engineer on which the SE Rupa Circle, RW Work Circle, Rural Work Circle Rupa, replied to the chief engineer with a copy to the applicant, SHRI KHYA, Changrang, 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 on 30th September 2024, stating that the information cannot be furnished as per Section 8, Clause 1, Subclause J of the RTI Act 2005. The PIO come executive engineer. PIO, you are executive engineer planning. SE planning. The SE block. Chief Engineer Western Zone का अंदर है SE वो SE come PIO Office of the Chief Engineer Western Zone RW Circle. Itanagar na? Oh, headquarters. GFS headquarters Itanagar. Stated that the information can be furnished if the commission orders so. But right now, the office of the PIO is of the opinion that the information stored by the appellant are personal information of an individual, which also is termed as third-party information, which can be provided by the due permission of the third-party individual or agency. So, hearing both the parties, the Commission hereby observes that section informations exempted under Section 8, Clause 1, Clause J of the RTI Act 2005 in certain cases can be ordered to be provided if
the public interest outweighs the interest of an individual, and therefore now we have to go through the Form A of the application and discuss. फॉर्म ए में आपका ये पीआईओ आप भी सुन रहे हैं ना, ये सर्विस कॉपी ऑफ सर्विस बुक, तो ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये तो एग्जेम्पशन में आता है। नंबर 1 जो है कॉपी ऑफ सर्विस बुक। अब जो एलिगेशन आपने जो बताया दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एप्लीकेशन, कि उसका जहाँ वो खुद एसई है वहां पे उसका वाइफ का फार्म कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो इलीगल है। वो अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट में भी उसमें दिया है गाइडलाइंस में कि जिस सर्कल में कोई इमीडिएट फैमिली रिलेटिव्स जॉब करता है वहां उसका फैमिली टेंडर नहीं मार सकता है, वो एक रूल है। लेकिन आपका ये फिर उसका जो इलीगलिटीज का ऊपर तो आपका आरटीआई तो नहीं मारा है आपने, आपने उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन को मांगा है, तो इसलिए नंबर 1 कॉपी ऑफ सर्विस बुक containing details of employee service records, 3 including appointment, promotion, transfer, leave records and other service related entries. कॉपी ऑफ सर्विस बुक तो इट इज डिनाइड, वो नहीं देगा। लेकिन जो अभी ये मांग रहा है कि सर्विस कब ज्वाइन हुआ है और उसको कब अपॉइंटमेंट हुआ है, कब प्रमोशन हुआ है और कहाँ का ट्रांसफर हुआ और क्या लीव वो लिया है, वो तो देना पड़ेगा। हाँ, वो काफी उसको एक एक पेज में कि कब उसको अपॉइंटमेंट किया है, ऑन विच डे, एंड देन उसको कब प्रमोशन किया है और कहाँ कहाँ उसको ट्रांसफर किया है और उन्होंने कितना लीव लिया है अभी तक, उसको आप देना पड़ेगा। उसको लिखिए अपॉइंट the information, the informations in clause A, clause 1, copy of service book is exempted, but in clause A, 1A, containing the detail of the service tenure of, क्या नाम है, ऐसी है लिख नीली लिखा कामिन be provided, and including the appointment letter, including promotion details and transfer, as well as the leave that he has taken till now in service. Copy of pay and allowance records to नहीं देगा। जस्ट नंबर 2 में सर सुनिए आप क्या हो, उसका जो स्केल पे है, उसको आप दे दीजिएगा अंदर। ये अभी वो क्या स्केल पे, कौन सा स्केल पे में उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया और अभी क्या स्केल में चल रहा है, वो दोनों से सिंपल 2 इंफॉर्मेशन। हाँ, स्केल ऑफ पे ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, स्केल ऑफ पे ऑन ज्वाइनिंग द सर्विस एंड ड्रॉइंग प्रेजेंटली, दैट हैज टू बी गिवन। कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर तो हो गया है, ऑर्डर हो गया। कॉपी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन रिकॉर्ड्स, जो कॉपी ऑफ सर्विस टेन्योर सर्टिफिकेट, ये तो जरूरी नहीं है, ये तो अभी हो ही रहा है, तो क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेटर तो देगा। सर्विस टेन्योर रिकॉर्ड तो अभी भी जॉब में है, वो तो मांगने का भी नहीं है। एम्प्लॉय सर्विस ड्यूरेशन ऑफ वेरियस पोजीशन, बहुत ऊपर भी मांगा है ना, वो थिंग ट्रांसफर प्रमोशन।
बाकी नहीं चाहिए, बस वही आपको मिलेगा। नहीं सर, वो काफी सफिशिएंट। हाँ, उतना इंफॉर्मेशन आप फिर से नोट कीजिएगा। उसका स्केल पे ज्वाइनिंग समय में क्या स्केल पे था और आज क्या स्केल पे वो ड्रॉ कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन, और कौन सा डेट को उनको अपॉइंटमेंट मिला है, उसके बाद कौन सा डेट को क्या पोजीशन में प्रमोशन हुआ है और कितना लीव लिया है अभी तक, उतना ओनली दैट फॉर इंफॉर्मेशन। ट्रांसफर हो। हाँ वही तो, ट्रांसफर का भी, हाँ। ट्रांसफर का भी, ट्रांसफर कहाँ हुआ है, प्रमोशन कब हुआ है, ट्रांसफर कितना कहाँ का हुआ है, और उसका लीव वो कितना लिया अभी तक, बस बाकी वो बड़ा वॉल्यूमिनस सर्विस बुक उसको नहीं देखना। नहीं हो नहीं। जी, ऑन और बिफोर जी। जी, ऑर्डर का है। ऑर्डर बहुत लंबा चल हो जाएगा, that would be too voluminous, बहुत होगा। सर ये फिर See, he is giving it on a seal and stamp view कि इतना दिन वो लीव दिया है, उतना दिन ये किया था। लीव का क्वेश्चन सर, ट्रांसफर का जो ऑर्डर है ना सर, ट्रांसफर ऑर्डर तो देगा वो लोग तो, अपॉइंटमेंट ऑर्डर। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो देगा, ट्रांसफर ऑर्डर तो देगा, वो तो उतना बड़ा वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ये तो कहीं 10 तो ऐसे दे दीजिए। 50 60 बार ट्रांसफर हुआ, ऐसे तो कोई भी नहीं होगा, तो 5 10 साल या 5 10 बार ही होगा। लीव का इतना इतना दिन वो लीव लिया, लीव ऑर्डर को देखने का भी नहीं है, देने का भी नहीं है, लीव इतना दिन लिया है, इस जगह में ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर ऑर्डर, इस जगह में प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन ऑर्डर, और इस समय पे पे स्केल इतना था और आज इतना ड्रॉ कर रहा है, डेट मच ओनली। सीटीसी का। हाँ। ना वो तो सीटीसी करना पड़ेगा, अब यू हैव टू सील एंड साइन, नो, एक जो आपका कवरिंग लेटर होगा, आप साइन करेगा इसको एड्रेस करके कि ये आपको दे रहा है, साइंड बाय यू विथ प्रॉपर सील ऑफ योर ऑफिस, देन एन इंडेक्स कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अंदर में है, उतना काफी है। उसमें हर एक पेज में साइन करने का जरूरी नहीं है, वन पेज इटसेल्फ सर्टिफाइज दैट ऑल पेजेस आर ऑफिशियल। So on or before the next date of 22 जुलाई, 22 जुलाई 2:30 PM तक आप एपिलेंट को दे दीजिएगा, और उस दिन एपिलेंट आपके ये इंफॉर्मेशन को मिल गया बोलने से हम लोग डिस्पोज कर देंगे। इंटरेस्टिंग।